occurrence we have given an array, we have to return the element whose occurrence is at least k number of times. Suppose in this example k is 2, so we have to find the element which has occurrence of 2. Suppose we have to find the element which occur 2 times in the array. Here 7 is occurring 2 times in the array and 4 is occurring 2 times in the array. Both elements are occurring 2 times, but we want the element whose second element means next occurrence will be first, means 4 next occurrence is closer from the first occurrence, मीन्स दोनों 4 पास में है. हम 7 इटरेट करेंगे, देन 4 इटरेट करेंगे, उसके बाद कौन सा पहले आएगा 4, तो हम यहाँ 4 को कंसीडर करेंगे. इस एग्जाम्पल में C3 हमें एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ occurrence चाहिए, तो कौन से 3 टाइम्स आ रहे हैं, एटलीस्ट मतलब 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं. तो 3 आ रहा है बहुत टाइम में, पर मतलब 3 आ रहा है 3 बार से ज़्यादा, और तो कोई नहीं आ रहा था. सो 3 इज़ द ओनली नंबर दैट appeared at least 3 times. Here how we will solve it, we will take a dictionary. In dictionary we check that if first one is not in dictionary, then we will append 1 and key is 1. 7, till now 7 is 1 only, so we will add its value 1. 4 not in dictionary, so we will add this 4 into dictionary at 1 times. 3 is not in dictionary, so we'll add 3 in the dictionary 1 times. 4 is in the dictionary, so what we will do, we will increase the value of 2, increase the value of 4 to 2. Now what we will do, we will check that its occurrence मतलब उसकी वैल्यू k के इक्वल या बराबर आ गई है क्या, आ गई है. 2 क्या है, k के इक्वल है, तो हम इसकी की यानी कि 4 रिटर्न कर देंगे. वी विल रिटर्न 4, और हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा कैलकुलेशन टाइम सेव होगा. नाउ सी द कोड. दिस इज द कोड. इसमें हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली है, हम अरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. इफ इट इज प्रेजेंट देन वी विल इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू बाय 1. साथ ही में हम ये भी चेक कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू का जो अकरेंस है वो केस से बड़ा है या बराबर है. अगर इस केस में अगर बड़ा है या बराबर है तो हम उस की को रिटर्न कर देंगे, और कोई एलिमेंट डिक्शनरी में नहीं प्रेजेंट होता है तो हम उसे डिक्शनरी में ऐड कर देंगे. और पूरा ट्रैवर्स करने के बाद भी अगर वो एलिमेंट एटलीस्ट k टाइम्स नहीं प्रेजेंट है तो वी विल रिटर्न -1.